Organizing Committee, Physical Education Department, Suri Vidyasagar College. I sincerely welcome all of you. Respected President Sir of Suri Vidyasagar College, Honorable Vice Chancellor Sir, all members of GB Suri Vidyasagar College, respected resource persons, speakers, principal sir, professors, teachers, administrative staff, students, all are welcome. At first, attention to all participants. Please mute while the webinar is in progress. If you have questions for your resource person, you may kindly note it down and put it in the chat box towards the end of the webinar. Please mute your audio and video throughout the meeting unless instructed by the organizers or the resource person. We have a specific interaction session at the end of the presentation where the resource person will try to address your inquiries. At the end of the webinar, we will provide the link for the feedback form. A link of the feedback form will be uploaded during the webinar, which must be filled and submitted to get e-certificate. We are looking forward to a successful session. Suri Vidyasagar College. The college is situated in the district headquarters of Birbhum, Sador Suri. Suri Vidyasagar College, named after the famous social reformer, great literary personality, moderator of Bengali language, and dedicated for the women empowerment, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, great social reformer. Our college stepped into 80 years at this eventful and glorious existence. Foundation day of the college, 9th March 1942. The declared goals, advice and service, Gyan, Tag, Sheba. The missions of the college are imparting higher education, developing personality, and raising socio-cultural awareness. The college is appreciated by NAC also. আমাদের আজকের এই যে ন্যাশনাল লেভেল ওয়েবিনার, সেটি ইংরেজি এবং বাংলা ছাত্রদের সুবিধার্থে দুটি ভাষাতেই আমি মাঝে মাঝে বলবো। ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন আয়োজন করেছে with IQAC of Suri Vidyasagar College in collaboration with IQAC of Suri Vidyasagar College, organized the Department of Physical Education. আজকের of physical education, yoga and sports in developing physical and mental health. One day national level webinar organized by the Department of Physical Education, Suri Vidyasagar College, in collaboration with IQAC, Suri Vidyasagar College. Chief Patron, Mr. Vikas Rai Chaudhuri, President of Governing Body, Suri Vidyasagar College. Patron, Principal, Suri Vidyasagar College, Dr. Tapan Kumar Paricha. Our chief guest today, Dr. Lakshmi Narayan Mondal, Vice Chancellor of Shikam Skills University, Technical Coordinator, Mr. Papa Shangui, Department of Physical Education Teacher, also associated with Mr. Aditya Mondal, another teacher of Department of Physical Education. আজকের এই যে ওয়েবিনার সূচিত হবে মধুমিতা মুখার্জি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমইউজের স্টুডেন্ট, তার উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাকে অনুরোধ করব এখন মধুমিতা মুখার্জিকে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। নমস্কার সকলকে, আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার উদ্বোধনী সঙ্গীতটি শুরু করছি। মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি, ওঠে কোন সুরে বাজি, মম অন্তর
কিন্তু আজি নিখিলের হৃদয় স্পন্দে মদিনা ওঠে কলসুয়ে বাহিয়ে আসে কোন তরুণ শান্ত বসনাঞ্চল প্রান্ত আসে কোন তরুণ শান্ত বসনাঞ্চল প্রান্ত আলোকের নীতি বনান্ত ওঠে কৌশুরে বাজে অম্বর প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃস্বরে মন্দির গুঞ্জে অশ্রু শীতলে বাজে করতালি পল্লব কুঞ্জে অম্বর প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃস্বর মন্দির গুঞ্জে অশ্রু শীতলে বাজে করতালি পল্লব কুঞ্জে সুরে বাজি পল্লব চঞ্চল ছন্দে মোর বীণা ওঠে সুরে বাজি কুণ্ঠিত আজি শিখিলের হৃদয় বীণা ওঠে সুরে বাজি। নমস্কার সকলকে। খুব সুন্দর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হলো, যে জাতীয় আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, Suri Vidyasagar College, in collaboration with IQAC Suri Vidyasagar College, আজকে যে আয়োজন করেছে তার সাথে সাযুজ্য রেখে পরিবেশিত হলো উদ্বোধন সঙ্গীত। Now, I humble request Professor Dr. Tapan Kumar Paricha, Principal, Suri Vidyasagar College, deliver speech, welcome address, and enlighten us. Dr. Tapan Kumar Paricha, please, sir. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ। Good afternoon, all the distinguished guests, our honorable chief guest, Vice Chancellor, Professor Lakshminarayan Mandal, Vice Chancellor of Sikkim Skill University, and our honorable speakers, Dr. Pintulal Mandal, from Government Physical Education College for Women, Hooghly, West Bengal, Professor Khetmalis. Sir, I think you are with us. Professor Khetmalis, our National Advisory Committee member of Vishwabharati University, and others advisory committee members. All are welcome, all the participants. Thank you for joining with us. And thank you to the organizer of physical education for taking this endeavor
though the department is not very old, but they are doing a very good job in their profession. Uh, Amongst this COVID situation, which is just we have overcome, at least literally, which has gave us the opportunity to hold such seminars in the form of webinars, and the department is organizing this national level webinar for the second time. Hope that all of us will be benefited from this webinar. Particularly, we all know that physical education is tremendously required and have a very good role, play always a effective role in the span of our life in building the sound health and sound mind, which is required to build a society, to build a nation as a whole. So this 2 hours will be the time of enlightenment, and keynote address will be delivered by Dr. Lakshminarayan Mondal, who is very much interested on the sports and health physique. Uh, though he was also our principal for the in the previous term for a long period of about 14 years, and then he has took the job of vice chancellor in Sikkim Skills University. So this is our opportunity basically to express our sincere thanks to him. Uh, During his time period, actually, this department has started its journey, and so let's hope for the best. And once again, I thank you, Dr. Tulal Mondal, Central University of South Bihar, and Dr. Biplav Chaudhary from the Physical Education College for Women, Government Physical Education College for Women, Hooghly, to kindly consent there and fit their time in the busy schedule of their time to be with us for this 2 hour and to enlighten all of us. সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজের তরফ থেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে। আগামী 2 ঘন্টা আমরা এক অসাধারণ সময়ের মধ্য দিয়ে এগোবো, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই ঋদ্ধ হব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন যা আমাদের সমাজকে অ্যাজ এ হোল আমাদের জাতিকে গঠনে সাহায্য করবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার কথা রাখছি। অধ্যক্ষ স্যার ডক্টর তপন কুমার পরিচা মহোদয়কে, তার কথায় আমরা সমৃদ্ধ হলাম। এরপরে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল মহোদয়কে কিনোট অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো। স্যার আগে বলেছেন যে ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল মহোদয় আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, দীর্ঘদিনে তার সমতেই তার সেই সময়কালেই এই ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টটি চালু হয়। তার চেয়েও বড় কথা, ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, ছাত্র ছিলেন।
এটি সবচেয়ে বড় তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্যারাকন সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর পদে রয়েছেন। আমরা তাকে পেয়েছি আজকে বিশেষভাবে। নাও আই রিকোয়েস্ট টু ডেলিভার স্পিচ রেসপেক্টেড ভাইস চ্যান্সেলর সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল স্যার। Okay, thank you, Susanto Raha. Do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good afternoon to you all, including our Good afternoon, resource persons and my beloved students of Suri Vidyasagar College. Maybe some of the students are coming from other colleges. And thank you very much for inviting me as a guest speaker for today's webinar topic. The topic is contribution of the physical education, yoga, and sports in developing physical and mental health. Our respected principal already expressed that I am a sportsman, as if I can go to yoga. That's not at all. I am a sports person, not. I am sports lover, you can say it. So first of all, I should thank of the program organizers, including the patrons, joint convener like Shomo, Bappa, Aditya, and advisory committee members. Probably they are from all the Suri Vidyasagar College, from the GB members, as well as the I2AC members. And some other respected persons are here as the national advisory members. I am saying through the link that Dr. Pintulal Mondal is the resource person today, and another respected person is Dr. Biplab Chaudhary. Dr. Pintulal Mondal, Assistant Professor, Department of Physical Education at Central University of South Bihar, Ganga. So, I will be speaking personality, probably at a minimum, because you know, so long you are living in Ganga, so Gaya, so you are also appointed in the meeting. Dr. Biplab Chaudhary, I cannot see his face. He happens to be the Assistant Professor, Department of Physical Education, Government of Physical Education College for Women, Hubli, West Bengal. Namaskar. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much. Thank you, sir. And welcome to Suri Vidyasagar College. And what the adjective had been given, prefixing my name. That I am myself as a student of Suri Vidyasagar College, Suri Vidyasagar College teachers, and for a time being, I spent the college activities as a principal. So all are known to me, and I am known to all of them, excepting the newly coming students from Suri Vidyasagar College. So I'm going to the main topic, the contribution of the physical education, yoga, and sports in developing physical and mental health. I'm going through the earlier thoughts, the thoughts of the India. Now India is growing rapidly as a global power, superpower. Global superpower. If I say the superpower of the world, you can see the recent turmoils are going to the western part of the European countries. All are thinking about that India is the superpower and beautiful country. Now, as per government to face the challenges of the century and to keep up with the pace of the world, maintaining health is of prime importance. Giving
task to help yoga are of great significance of today's world. The government of India insists on physical fitness, mental health, overall development of the personality for every citizen. In these lines, the government has launched Fit India Movement, Fellow India, National Sports Day, International Day of Yoga, etc. These initiatives have given impetus and awareness among general public and professionals and academicians. However, creating efficient and skilled human resource in the field of physical education, sports and yoga. Coming to this, the topic of this webinar seminar, I think it is in the third India, or you can say Bharsha, and practically the sports department, physical education department taken a perfect topic for this webinar. I am going back to the Swami Vivekananda. Education is the manifestation of perfection already existing in man. The primary objective of the education is overall personality. Complementing to this object, the paradigms of physical education, sports, and yoga are integrated under the National Education Policy, that is NEP 2020. Physical education, sports, and yoga professionals will contribute in bringing health and wellness at every aspect of one's personality. Thus, developing and proposing the syllabus, which will be coming as for NEP 2020 as a framework for physical education, sports and yoga, which is very interesting assignment. We have to keep in mind in broad guidelines given by the US about the making of citizen of 21st century equipped with critical thinking, problem solving, analytical reasoning, cognitive skills, self-directed learning, etc., etc. The broad aim of this framework is to make the physical education, sports, and yoga accessible and available to masses by creation of professions in physical education to the higher education institutions. Sure. I am going to the future's thought of the India government, which has been opened as a draft for the NEP 2020. What are the suggestions and proposals for building harmony for Indian university based on demographic diversity in India? NEP 22 has provided us an opportunity for reimaged, redesigned, and restructured of the entire system of multidisciplinary, flexible curricula, the modifications of credit structures with at least one vocational course before graduating. I think the students who are still now in this platform, they are all acquainted with the CBCS system, that means choice-based credit system. You are having so many subjects like CC, GE, SEC, etc., AECC 1, AECC 2. In that NEP 2020, India government has given so importance of the technology forum. What is that?
it is not for the bank transaction. It also be incorporated into your syllabi by your respective university. The AI, that means artificial intelligence, machine learning, blockchains, smart boards, big data, ethical hacking, prior technology, no, biotechnology. It has wrongly been printed. Biotechnology 360 format. Remember this. The biotechnology 360 format. Only one university is present, which is in Kerala. Renewable energy, environment, and society, organic farming, etc. Why NEP? Because of the education program of the 1968 and 1986, which is known as the education policy, that failed to improve the achieve the goal. Now, for the ADP, you will go into a different format. You can see at the left side that HECI, which will be termed as the Higher Education Commission of India, and NHERC, that is the National Higher Education Regulatory System. Previously, it was NACC, National Assessment and Accreditation Council. It will now be in terminology with National Accreditation Council. Previously, it was a UGC. So for the development of the higher education, all the grants will be coming from the Higher Education Grants Council, and GEC, that is General Education Council. So coming to the topic, that is the yoga or sports or physical education. We know, and the students are also very much fond of yoga because of it brings the body and mind together to become a harmonious experience. Man is a physical and mental spiritual being. Yoga is a method of learning that aims at balancing mind, body, and spirit. Yogic exercises recharge the body with cosmic energy and facility. The mind is a composition of four different forms, which is in yogic terminology defined as the manos, buddhi, chitta, and ahankara. We all know about those games and sports. The uh, physical educational departmental students, they are all very fond of sports and games. I think you know what's the difference between sports and games. Sports particularly can lead to injury because of its repetitive nature and the resulting musculoskeletal imbalance. Increased flexibility, decreases stiffness, and reduces many nagging aches and pain. And last of all, I am coming to physical education. Physical education is not only a good for us, it also has great influence on our mind. Finding an activity can help, it can release the tension, the stress of mental fatigue, a natural energy boost, a sense of achievement, the feeling less angry and frustrated, a healthy appetite, and having fun. So, uh, uh, I'm coming to the CDCS system also, because we will see after the formation of the syllabi as per ADP, you will see that it has a DAC, that means discipline specific core subject. It will have some skill enhancement course, which is known as the SEC. And particularly for this, I think the students, they will have some employability, entrepreneurship abilities, uh, the learning outcome and skills, and so on. To conclude, according to who, health is the state of complete physical and mental, social,
well-being, there is no health without mental health. Though we are having, according to Swami Vivekananda, we are having so many sensory organs. বলতেই পারি বাংলায় যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, and mind, there is no sense organ. It is the amalgamation, it is the external environmental influence alone with some sensory organs capability, the mind is formed. So to make the mind a beautiful one, you will have a mental health. Ultimately, you will be a good health. So this is all about this webinar topic. And to conclude again, I should pay my gratitude to the principal, Suri Vidyasagar College, Pintu Mondal, and Dr. Biplab Chaudhary, and so other persons who are present here, for inviting me as the chief guest. I am really proud of it for being with you. Rather, I am far away from your side, not so much. It is in the vicinity of the Birbhum, nearly Bolpur, and nearly Suri. I can go to the Suri, but so long the scope has been given that there will be a virtual meeting for this webinar. So I take this opportunity of this place where I am in now, that is Sikkim Skill University. And with all this, I thank you all again for respecting me, for inviting me as the chief guest. I will be hearing Dr. Pitula Mondal and Biplab Chaudhary, and some other persons will be talking about this. So thank you very much. Thank you a lot. Thank you. Thank you. Thank you, VC sir, for your motivating speech. We enlightened ourselves. Sir, thank you again. Now, I would like to hear some valuable words from Dr. Pintulal Mondal, resource person, assistant professor, Department of Physical Education, Central University of South Bihar. Topic of this session, a sound mind in a sound body, how we improve it through practicing yoga. ডক্টর পিন্টুলাল মন্ডল, স্বামী বিবেকানন্দর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্যারও আগে বললেন, মনে পড়ে যাচ্ছে, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা অধিক শ্রেয়। এই পথে আমি আবারও ডক্টর পিন্টুলাল মন্ডলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই সেশনের তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। Thank you very much, sir. Thank you. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. I just extended my heartful thanks to the organizer to giving an opportunity to deliver a lecture on such a wonderful and very relevant topic, which is the contribution of physical education, yoga, sports in developing physical and mental health. Before I begin my session, I convey my highly gratitude to Chief Patron, Mr. Vikas Rai Chaudhary, Honorable GB President of this college, Patron Lecture, Honorable Principal of this college, today Chief Guest, Professor Lokinaran Mondal, Honorable Vice Chancellor of Sikkim Skill University, and all the members of National Advisory Committee, especially Mohesh Seta Khatmelis, and all other the distinguished who is connect directly and indirectly with this webinar. I also would like to thank and congratulate today another resource person who is going to serve the next session, my respected senior Dr. Biplab Chaudhary. And lastly, but not leastly, I extended my heartiest welcome to all the participants.
Just I want to share my. Please allow me to share my presentation. Bappa sir. Okay. Okay. No. Is it clearly visible? Okay. Okay. Is it clearly visible? Okay. Before I going to deliver my lecture, generally close your eyes because we just entering this session with a prayer. Om Shahanu Bhavantu Shahanu Bhunaktu Shahaviryam Karvavahe Tejasvi Vamadita Vastu Ma Vidvisha Bhavai. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, now we begin the session. Actually, it is a national webinar. So here, I think, as per my knowledge from the organizer, there are so many participants from outside of the West Bengal also. But I tried my best with bilingual because also the most of participants from West Bengal they are from the UG level. So I am using the English, Hindi, or Bengali also because I can speak Bengali. I have all the study from the Bengali medium, so it is not problem. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा है जो बाहर का जितने सारे पार्टिसिपेंट है उन लोग के लिए बेंगोली अगर बोला जाएगा तो उन लोग को समझ में नहीं आएगा तो दोबारा दोहराना पड़ेगा हमको तो इसलिए मैं ये ट्राई करूंगा ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में बोलने के लिए अगर किसी का इसके तो बंगाली में बोल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके लिए दोबारा हमको बोलना होगा हिंदी में सर कोई एक फीडबैक दीजिए मेरा आवाज और ये विजिबल है क्या नहीं एक बार बताइए हमको हाँ सर विजिबल है ठीक है सर ओके तो ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं ओके ओके थैंक यू ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी ये जो टर्म ऑलरेडी हम लोग सब लोग लगभग जानते हैं यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट है जितने सारे जो जुड़े हैं सब लोग थोड़ा बहुत इसके इनर मीनिंग क्या ये नहीं जानते लेकिन इस लाइन के साथ इस सेंटेंस के साथ हम लोग सब लोग ही परिचित है क्या है एक्चुअली इट इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस कोटेशन बाय द pre-Socratic Greek philosopher Thales of Miletus, who was Greek mathematician, astronomer, and pre-Socratic philosopher. इसका मतलब क्या है ये प्रोवर्ब का क्या मतलब एक्चुअली इसका मतलब यही है कि माइंड एंड बॉडी शुड बी बोथ हेल्दी एंड साउंड ओके किसी का माइक्रोफोन शायद अनम्यूट है अभी जब इंटर स्कूल में अब उसको ऐसे नेगलेक्ट करेंगे हम एक्सक्यूज मी किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट करिए मेरा नाम भेजा ना मैं तो जा ही नहीं रहा लेटर भेजो स्कूल जब जाऊंगा
आया उसमें लिस्ट में, मैं सर को दिखा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये प्रोवर्ब Hello. का जो मीनिंग्स है, द प्रोवर्ब व्हिच इज और origin of breath, this mind and body should be healthy and sound. देखिए कोई भी जैसे अगर माइंड साउंडेड चाहिए तो बॉडी भी साउंडेड चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग ऐसे कर एक एग्जांपल देते हैं, कोई भी हीरे, माइंड को अगर हीरे के साथ जोड़ते हैं और बॉडी को उसको जो हीरे रखने के लिए भी बहुत अच्छा एक बॉक्स होता है, एक चर होता है, तो बॉक्स के साथ जुड़ते हैं तो देखिए कोई भी हीरे रखने के लिए अच्छा सा एक बॉक्स होना चाहिए। एट द सेम टाइम किसी के हीरो को रखने के लिए किसी बॉक्स, अच्छा वाला बॉक्स में अगर कोई ऐसे ही कोई पत्थर रख दिया जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं, ठीक नहीं होगा। तो अच्छा बॉडी के लिए जैसे माइंड जरूरी है, ऐसे ही अच्छा माइंड के लिए अच्छा बॉडी भी जरूरी है। किस केस में अच्छा चीज रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे द sound mind in a sound body demonstrating the close link between the physical exercise, mental equilibrium and the ability to enjoy the life. लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हेल्दी पर्सन कैन थिंक नॉर्मल एंड एक्ट इंस्टेंटली इन एनी गिवन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में कोई जो हेल्दी होगा वही सिर्फ उसका हैंडल कर पाएगा। किसी का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं, उसका फिटनेस लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है उसका काम के हिसाब से, तो वो क्या है ना, हर टाइम उसका माइंड में एक चलते रहेगा जो मेरा तो मेंटल इतना अच्छा, मेरा फिजिकली इतना एबल नहीं है जो मैं ये काम कर सकते। तो इसलिए क्या है ना, पहले से ही उसको काम करने के लिए पहले से ही उसको ना बहुत जो इनर जो इंटरेस्टेड से जो पैदा होता है, जो पावर आता है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए। कोई भी मेंटली अगर कोई काम करना होगा तो आपको फिजिकली हेल्दी भी होना चाहिए, एक ही साथ 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 आपको मेंटली साउंडेड भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए योग, जैसे मेरा जो टॉपिक है इसमें मैं बोला है कैसे हम लोग ये जो साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए किसके द्वारा कर सकते हैं, योग के द्वारा। तो ऑलरेडी हम लोग लगभग ऑल ऑफ आर नोन टू अबाउट द योग, व्हाट इज योग। लेकिन इसका इनर मीनिंग मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ आज, ये बहुत इजी, ये हर किसी को पता है, लेकिन इसका इतना सोच हमारा क्या होता है, लाइट का ऊपर लाइट रह जाता है, नीचे में उसका सेट पड़ते हैं, तो सेट की तरह नहीं देखते उसका इतना नीचे। ऐसे ही है जोक लेके हम लोग इतना कुछ कर रहा है। जोक इज एन वेरी इनलाइटेड प्रोडक्ट नाउअडेज। जोक को लोग जैसे जान करा जा रहा है, तो इसलिए जोक क्या होता है, देखिए इसका वर्बल रूट जूझ, व्हिच इज मींस संस्कृत वर्ड जूझ से आया है, जिसका मीनिंग है ज्वाइनिंग। जुज्जते एनने इति जोग, मतलब ज्वाइन होना। किसके अंदर, व्हाट आर द एंटाइटल्स फॉर द ज्वाइन, ज्वाइन के लिए क्या क्या रहते हैं। ट्रेडिशनली टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं इसको ज्वाइन के लिए, इंडिविजुअल सेल्फ के साथ यूनिवर्सल सेल्फ का ज्वाइनिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग है, इसका इंडिविजुअल सेल्फ क्या होता है, यूनिवर्सल सेल्फ क्या होता है, ये लेके थोड़ा बहुत इतना डीप में नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग भी जब स्टूडेंट था बहुत सारे टर्म टीचर लोग बताते थे तो सब कुछ नहीं समझ में नहीं आता था। तो इसलिए उसका इंडिविजुअल सेल्फ मतलब वो खुद, और उसका सबसे अच्छा अगर कुछ माना जाए, जैसे उसका पढ़ाई में कोई मैथ लेके पढ़ाई कर रहा है, कोई फिजिकल एजुकेशन लेके पढ़ाई कर रहा है, तो उसका सबसे अचीव करना, सबसे उसका जो गोल होता है पहले से उसको अचीव कर उसके साथ जोड़ना ही है यूनिवर्सल सेल्फ। ऐसे जोग का एक गोल है। इसके नेक्स्ट में आएगा वो बात। देखिए क्या बोला है महर्षि पतंजलि, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, जगस्य चित्तवृत्ति निरोध, जोग इज द रिमूवल ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। माइंड का जितना सारा चित्त का वृत्त होता है उसको निरोध करते, रोक देते, उसको ही क्या बोलते हैं, जोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योग सूत्र। वृत्त
है, बाहर से बुराई, ज्यादातर से नेगेटिव थॉट्स जो अंदर आ रहा है, इसमें हमारा प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद देखिए श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता ने क्या बोला है, जहाँ पे बोला है जगश कर्मोषु कुशालम, कर्मोषु डू वर्किंग, कुशालम सेटिस्फेक्शन, मतलब द मैन हु इज डूइंग हिज वर्क विद सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड जोग। जो मैं काम कोई भी लोग जो जब कर रहा है उसके साथ अगर सेटिस्फेक्शन के साथ उसका फुल हार्टेड हार्ट दे के करेगा तो उसको बोल सकते जोग। ठीक है, गीता ने ऐसे बोला है। इसमें देखिए ये जो महर्षि पतंजलि का जो डेफिनेशन है जोग के रिगार्डिंग, कोई भी दो आप पत्र लीजिए जिसके अंदर पानी है, पूरा सफाई पानी क्लियरली, और उसके अंदर एक सिक्का फेंक दीजिए आप। देखिए सिक्का फेंकने के बाद दोनों ही थोड़ा टाइम बाद देखने आएगा ऊपर से, एक के अंदर एक हिला दीजिए आप, देखिए जो हिलेगा जिस पॉट में उसका अंदर का जो सिक्का रहेगा उसको नहीं देखने मिलेगा अच्छा से। मतलब ये वृत्ति आपके माइंड के अंदर जो फ्लैक्चुएशन, इसमें क्या करते हैं आपको रोक देते हैं, आपको कोई भी काम करने के लिए बाहर से आपको देखने के लिए। जैसे बहुत बार यहाँ पे नाम किए सर, हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर सर बोला है स्वामी विवेकानंद के लिए, हम लोग सब लोग उसका बिहेवियर से बाहर से पता चलते थे। जोगी पुरुष को जितने सारे फ्लैक्चुएशन है सब कुछ रिमूवल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये सबसे समझने की जगह है। मेरे जो प्रेजेंटेशन में बनाया है इसमें थोड़ा कोशिश की है इसको समझने के लिए, क्योंकि व्हाट डू मोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल थिंक ऑफ जोग, जोग लेके लोग क्या समझते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल वो लोग क्या समझते हैं, इसके ज्यादा मैं फोकस दिया है इसके अंदर। क्योंकि देखिए देयर आर नंबर ऑफ कॉमन मिसकंसेप्ट है, कंसेप्शन अबाउट द जोग अमंग द जनरल पब्लिक। दे थिंक द practice of jog is to do only the आसन, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा, षटकर्म एंड मेडिटेशन। जितने सारे ज्यादा लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं योग मतलब क्या है, कुछ थोड़ा बहुत आसन कर लेना और प्राणायाम करना, षटकर्म करना, मेडिटेशन करना, ये सब है योग। लेकिन अगर योग का जितने सारे लिटरेचर है इसको अगर देखा जाएगा तो ये जितने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसको छोड़ के योग का एक वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है योग का। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो क्या है, देखिए महर्षि पतंजलि जिसको फाउंडर ऑफ योग बोला जाते हैं, उसका योग दर्शन में स्पेशली ही मेंशन द अष्टांगिक योग, अष्टांगिक योग के बारे में बताया, जो 8 लिम्स 8 स्टेप है। जिस सिर्फ योग का ना, कोई काम का, जैसे मैं अभी बोला था जो स्टूडेंट के बारे में बोला, जो स्टूडेंट है उसका काम के लिए बोला था, जो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके सबसे ऊपर अचीव करना मतलब ही वो यूनिवर्सल सेल्फ में, उसका पढ़ाई का लेवल में यूनिवर्सल सेल्फ के साथ मिल रहा है वो। तो ऐसे ही इसमें जाने के लिए क्या क्या है, इसमें 8 मेंशन किया है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है 8 स्टेप है। तो देखिए इसके अंदर से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान थोड़ा बहुत करते हैं, और बाकी जो कुछ है, जो कुछ की ना कुछ प्रैक्टिस करने का कुछ अलग से कोई टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ आपका डेली लाइफ स्टाइल है उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे देखिए यम एंड नियम, यम के अंदर क्या आता है, ये मतलब सोशल डिसिप्लिन। आपको सोसाइटी में, हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन, लेकिन हम लोग मानते नहीं है आजकल, ज्यादा उसी का जो है रियल उसके अलावा दूसरा चीज में करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह है। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा ये देखिए, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस, जैसे आसन के लिए अलग से एक टाइम और प्रैक्टिस करना होता है, प्राणायाम के लिए प्रैक्टिस करना होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना नहीं, सिर्फ आपको साथ रखना है, हर टाइम आपको साथ रखना है। नियम, नियम मतलब पर्सनल डिसिप्लिन,
जिस मतलब क्लीन रहना होता है, आपको हर टाइम खुश रहो, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो हम लोग ये छोड़ के अगर आसन प्राणायाम में करूंगा तो क्या होगा, एक देखिए आपका किसी का भूख लगा है, ठीक है, उसका भूख का क्वांटिटी से अगर मेजर करा जाए तो उसका भूख का ऐसे है, उसका भूख लगा है 250 ग्राम का, अगर केक के साथ मैं कंपेयर करते तो एक केक 250 ग्राम का केक उसको खाने में उसका भूख मिटेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ 50 ग्राम उससे खा रहा है। जैसे 50 ग्राम मतलब आसन प्राणायाम कर रहा है और थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहा है, और बाद बाकी जो 150 ग्राम वो छोड़ जा रहा है। तो कैसे हमारा, कैसे इसका बेनिफिट जो है, आपको भूख मिटेगा कैसे, तो भूख तो रह ही जाएगा। ऐसे ही हम लोग योग के लिए क्या सोचते हैं, योग के लिए सिर्फ आसन प्राणायाम ये सब सोचते हैं, लेकिन इसका जो फास्ट टोटालिटी है इसको हम लोग नहीं सोच के बाकी सबको छोड़ दिया। एक्चुअली इसके लिए हम लोग सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, इसके लिए जो योग के ऊपर मैं इसमें कोई बुरा मत मानिए, आई एम सॉरी टू एवरीवन, दोज आर बिलोंग्स टू द योग फैटर्निटी। इसके लिए क्या है ना, हम लोग को इसका लिटरेचर के बारे में नहीं, इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा तरीके सिर्फ जो करने वाला, जैसे हॉट योग में इसको प्रोडक्ट के तरह आजकल यूज करा जा रहा है योग को वर्ल्ड वाइड, और इसको आसन का मॉडिफिकेशन तो क्या है ना, इसका इंडिया में हुआ है लेकिन इसका मॉडिफिकेशन होके आ रहा है बाहर से, हॉट जो वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम। बट क्या होता है, हम लोग सिर्फ आसन प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिटिल बिट मेडिटेशन, तो हाउ कैन वी टेक फुल एडवांटेज ऑफ योग, योग का फुल जो एडवांटेज होता है कैसे हम लोग मिल सकते हैं इसके से। तो हम लोग को क्या करना है, पूरा भूख मिटाना है, तो सब कुछ जो महर्षि पतंजलि बोला है उसके अंदर सब कुछ करना है। जैसे प्रोत्ताहार कब भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब विड्रॉल ऑफ सेंस, आपका जो माइंड है कोई चीज के लिए ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, अच्छा और बुरा कोई भी, आपको साथ कोई बुरा हो गया हम लोग उसी को लेके हार्ड टाइम बिताते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो दूसरा काम छोड़ देते हैं, अच्छा को लेके सूखते रहते हैं, मतलब प्रोत्साहन है नहीं हमारे अंदर, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते, कुछ कर सकते। इसके बाद देखिए इसमें आते हैं हाउ वी इम्प्रूव आवर सेल्फ इन बॉडी माइंड थ्रू द प्रैक्टिसिंग जॉब, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करके जो प्रैक्टिस करते कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग को। देखिए इसमें एक बात है, किसको इम्प्रूव करना है, क्या देके इम्प्रूव करना है, ऑलरेडी मैं बोल दिया, योग देके। और योग क्या है, सिर्फ आसन प्राणायाम मेडिटेशन ये नहीं है, योग मतलब सब कुछ है जो महर्षि पतंजलि ने बोला है, ये सब कुछ है योग में। तो सब कुछ करके सिर्फ आसन करने में क्या होगा, हमारा जो फिजिकल बॉडी इसका डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है किसको हम लोग इम्प्रूव करना है। यहाँ पे भी देखिए तैत्तिरीय उपनिषद गिव द कंसेप्ट ऑफ पंचकोशा एंड देयर डेवलपमेंट कोश मींस द लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारा अंदर हमारा मनुष्य शरीर 5 लेयर लेके तैयार है। क्या क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, योग के भाषा में बोल रहे हैं पंचकोशा, जो है कि ना अन्नमय कोश जिसको फिजिकल बॉडी बोल सकते, प्राणमय कोश प्राणिक बॉडी बोल सकते, मनोमय कोश माइंड बॉडी बोल सकते, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल बॉडी बोल सकते, एंड आनंदमय कोश मतलब ब्लिस बॉडी। तो देखिए कैसे हो रहा है डिस्टर्बेंस, कैसे द डिस्टर्बेंस इन मनोमय कोश परकुलेट्स इनटू द फिजिकल लेयर, अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश। कोई भी डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, मनोमय कोश से। हम लोग आंख से कुछ देख रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो क्या आ रहा है, इंपल्सेस आ रहा है, वो बाद ही आपको प्राणिक लेवल में उसको थ्रू हो रहा है। प्राणिक लेवल का थ्रू होने के बाद क्या हो रहा है, आपके अंदर जितने कुछ फिजियोलॉजी है देखिए चेंज होते रहते हैं। हम लोग कुछ देख के डर गया, नहीं तो हमारा अंदर कुछ सैडनेस आ गया, किसी को देख के दुखी बन गया, तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, प्राणिक लेवल में चेंजेस आता है। देखिए कोई भी चीज हम लोग देख लिया, देखते हैं कौन, माइंड, पहले माइंड को अटैक कर रहा है, उसके बाद फिजिकल बॉडी में के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा प्राणिक लेवल को डिस्टर्ब पहुंचाते हैं। तो इन द मॉडर्न एरा द डिजीज ऑफ साइकोसोमेटिक टाइप ऑफ लाइक एस्थमा, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन एटसेट्रा आर ट्रीटेड थ्रू योग और ड्रग एंड सर्जरी।
क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, जैसे अगर आप बोला जाए फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ड्रैग खा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ, नॉट क्योर। सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, क्योर नहीं हो पाता है इसमें। तो क्या करते, जो क्या करते, टोटल रिहेबिलिटेशन, किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ जोग थेरापी। ये बेंगलोर का एस भाषा से किया गया एक रिसर्च के बाद ही इसको नाम दिया गया है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संगठन एक यूनिवर्सिटी है, आप लोग को बहुत लोग जानते हैं। तो योग, तो इसको क्या है, हमारे कोष मतलब हमारे बॉडी का जितने सारे लेयर है, इसके ऊपर हम लोग अगर काम करो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हमारा बॉडी साउंडेड हो जा रहा है, एक ही साथ माइंड भी हो रहा है। तो कैसे काम करते हैं देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ जो बेस्ड ऑन द पंच कोशा, 5 लेयर के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर, फर्स्ट जो लेयर है वो क्या है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब क्या, अन्नमय मतलब अन्न देके, अन्न मतलब फूड, फूड देके जो बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी जो है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग अच्छा खाते हैं तो हमारा कहा आता है, फिजिकल बॉडी से देखने मिलता है। तो ये क्या है, जैविक डाइट, क्रिया, लूजिंग एक्सरसाइज, योगासन टू रिमूव द फिजिकल सिम्टम ऑफ द अलाइनमेंट। मतलब क्या होता है, अन्नमय कोश के लिए क्या करना होता है, हमारा अच्छा खाना खाना चाहिए, यौगिक डाइट करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए, लूजिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, या योगासन करना चाहिए। शीतलीकर्म व्यायाम को बोलते हैं लूजिंग एक्सरसाइज। क्या क्या शीतलीकर्म व्यायाम, मतलब आपको जितने सारे बॉडी पार्ट है उसको लूजिंग करना, टू एक्टिव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट को बॉडी करना, टू लूजिंग द जॉइंट। ये जो कुछ है एक्चुअली, इसके लिए अगर हम लोग बात करा जाए तो ये जैसे पंच कोशा को लेके और अष्टांगिक जो योग बोला है मैं, ये लेके एक एक पूरा दिन तक बात हो सकती है, इतना कुछ है इसके अंदर। लेकिन हम लोग को क्या है ना, मेन पॉइंट में जाना है, कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं हमारा अन्य जितने सारे लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर। फिजिकल एक्सरसाइज लगता है किसके लिए, अन्नमय कोश के लिए। योगासन लगता है, इसको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, योगासन का ऑलरेडी पता है सब लोग को। क्रिया, त्राटक, नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, नौली, ये सब किसके ऊपर काम करते हैं, सब करते हैं अन्नमय कोश के लिए, आपको फिजिकल बॉडी को डेवलप करते हैं। इसके बाद देखिए प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब प्राणिक लेवल, हमारा जो सांस प्रश्वास होता है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये कुछ जितने सारे सिस्टम्स है, इसको ऊपर ये प्राणिक लेवल कंट्रोल करते हैं। तो प्राणायाम इसके लिए मेन, बंधा मुद्रा, ये सब करना होता है। इसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ कुछ है, जैसे IRT, DRT, QRT, MSRT, ये जो कुछ है ना, इसका अगर प्रोसेस इसमें नाम के लिए एक एक लेक्चर होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों ऐसे बोला आप लोग को, क्योंकि आप लोग के नाम बताने के बाद क्या क्या करना है, आप लोग कुछ भी दूसरे जगह से कुछ रेफरेंस देख के भी आप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड और दोज आर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड रहेगा। जस्ट और 2 मिनट्स आई टेक ऑलरेडी। इसके बाद देखिए मनोमय कोश। मनोमय कोश के लिए क्या है, देखिए हम जैसे बोल रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ योग करते, आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये सब करते। लेकिन मनोमय कोश के लिए कुछ करना चाहिए, जो कुछ हम लोग नहीं करते। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑफ माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन योग। कैसे होता है, जैसे धारणा, ध्यान एंड समाधि से होता है। और क्या करना होता है, इसको डेवलप करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल इमोशन and gain the control over the emotion. Devotional session is very useful. मतलब आपको devotional session सुनना चाहिए, आपको प्रेयर करना चाहिए, आपको चांद भजन सुनना चाहिए, कोई भी मोटिवेशनल जो स्पीच होता है उसको सुनना चाहिए मनोमय कोश को डेवलप करने के लिए। तो होलसम डेवलप करना है तो ये कोश के हिसाब से करना है। हम लोग सिर्फ आसन करने में हमारा ये पार्ट इमोशन के ऊपर कंट्रोल ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब क्या होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल, आपको सेल्फ रियलाइजेशन क्रिएट करना है, आपको खुद को पहचानना है, आप क्या है, आपका अंदर कितना कुछ है। हम लोग क्या
करते हैं, हमारा जो इनर इसको ठीक ठाक से नहीं जानने में इम्बैलेंस क्या करते हैं, टर्न्स कॉजेस द रॉन्ग हैबिट्स। किसमें खुश मिलता है, किसी किसी को गाना गा के खुश मिलता है, किसी किसी को गाना सुन के खुश मिलता है, किसी को खा के खुश मिलता है, किसी को दूसरों को खिलाने के बाद खुश मिलता है। तो कौन चीज असली है, इसको अगर आप पहचान लोगे तभी आपको गुड हैबिट बनेगा। हम लोग आजकल का जो लड़का, हम लोग जो है अभी जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है सोसाइटी का, जैसे सोशल मीडिया इतना, कौन सा चीज अच्छा है इसका, कौन सा बुरा है, ये लोग हम लोग नहीं जानते, इसलिए हमारा रॉन्ग बैड हैबिट की तरह जा रहा हूँ हम लोग। कोई अल्कोहल एडिक्टेड हो जा रहे थे क्योंकि वो सोचते हैं उसी में मजा है, उसी में खुशी है, तो इसलिए वो उस साइड को ध्यान रखना है बिकानोमाई कोर्स को अच्छा करने के लिए। इसके बाद देखिए लेक्चर, पर्सनल काउंसलिंग इज आल्सो प्रोवाइड पावरफुल द बेनिफिट फॉर द बिकानोमाई कोर्स। बिकानोमाई कोर्स के लिए क्या होता है, आपको जो लेक्चर होता है, पर्सनल जो काउंसलिंग होता है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आते हैं आनंदमय कोर्स, मतलब ब्लीज बॉडी। जितने कुछ हम लोग किए हैं अन्नमय कोर्स से लेके विज्ञानमय कोर्स तक, उस सब कुछ आनंदमय कोर्स के लिए करना होता है, मतलब उसके लिए अलग से करना नहीं होता है। जो हम लोग अन्नमय कोर्स के लिए कर रहे हैं उसी को आनंदमय कोर्स में आके जमा होता है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं। देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहाँ पे किया है हम लोग, प्राणामय कोर्स के लिए किया है। योगासन किसके लिए किया है, अन्नमय कोर्स के लिए किया। क्रिया अन्नमय कोर्स के लिए। रिलैक्सेशन टेक्निक अन्नमय कोर्स के लिए। मेडिटेशन किया है हम लोग विज्ञानमय कोर्स के लिए। डिवोशनल सेशन सुना है, लेक्चर सुना है, काउंसलिंग, हैप्पी असेंबली, ये सब कुछ किए किसके लिए, पूरा जितने सारे हमारा 5-4 लेयर है इसके आगे उसके लिए। अगर वो लेयर अगर धीरे धीरे एक, अगर आपका अन्नमय कोश अच्छा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्राणमय कोश अच्छा होगा। आपका प्राणमय कोश अच्छा होगा तो धीरे धीरे आपको मनोमय कोश भी अच्छा होता जाएगा। ऐसे ही आपका, आप अगर योगासन शुरू करें, पहले आप योगासन शुरू करिए। आपको जो कुछ मैं ही बोला है योगासन के अलावा बाकी जितने सारे योग का पार्ट बोला है वो नहीं, आप योगासन शुरू करिए। धीरे धीरे देखिए दूसरा चीज भी आपके अंदर आना लगेगा। यही है मेन चीज। तो हम लोग साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी अगर तो इसके लिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, परिणाम सुनने के लिए, इसके लिए अलग से कोई टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब डेली जो हम कर रहे हैं इसके अंदर ये सब करिए। अच्छा से किताब पढ़ने के लिए ये सब भी आता है इसके अंदर। हम लोग थोड़ा बहुत आसन कर लिया 2-4 और प्राणायाम कर लिया, मतलब हम लोग योग नहीं कर रहा है टोटल, सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो नमस्कार एंड ओम शांति। दिस इज द होल थिंग्स। Thank you, Dr. Pintulal Mandol, for your valuable speech, delivery, Thank you. your motivating speech. Also, encourage our students also. Next, I request to Dr. Biplab Chowdhury, Assistant Professor, Department of Physical Education, Government of Physical Education College for Women, হুগলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই সেশনে যে টপিক নিয়ে আলোচনা হবে, বেনিফিটস অফ এক্সারসাইজ অন মেন্টাল হেলথ। টপিক বেনিফিটস অফ এক্সারসাইজ অন মেন্টাল হেলথ। আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করে নেব। তিনি বলছেন আমাদের যুবকদেরও সঙ্গীত এবং শারীরিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করা উচিত। জন এফ কেনেডি যেমন বলছেন, ইন্টেলিজেন্স এন্ড স্কিল ক্যান অনলি ফাংশন at the peak of their capacity when the body is healthy and strong. Now I humble request Professor Dr. Biplab Chowdhury to deliver speech topic benefits of exercise on mental health. Dr. Chowdhury. Thank you, Susanto sir. ঠিক আছে। Honorable Vice Chancellor, Professor Dr.
Lokhinaran Mondol, sir, Sikkim University, Honorable Principal Dr. Tapan Kumar Poricha, sir, Principal Vidyasagar College, Suri, and resource person, Dr. Quintulal Mondol. I congratulate him for his wonderful lecture, wonderful, elaborative, detailed lecture on yoga, and we are very much uh, benefited from your lecture. And I hope all the students have been benefited from your lecture. Thank you, Dada. And Somu sir, my brother like Bappa sir and Aditya sir. I'd like to congratulate you for organizing such a wonderful webinar from your college, and I also very grateful that you invite me as a resource person for this webinar. Now I will try to share my screen. I hope it will work. Is it visible to you? My computer screen? No. Okay. I'm just opening my PowerPoint presentation slides. My computer is a little bit slow, and I'm sorry for that. So good afternoon, all of you. Today, my topic is benefits of exercise on mental health. Before going to detail, we'd like to know what is mental health. Actually, I think there are some misconceptions regarding mental health. So first of all, I think we should focus on what is mental health. So it is related to our emotional, psychological, and social well-being. Mental health is related to our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, how mental health is important at every stage of life, from aging. Throughout the life, it is very essential part. And what helps mental health help us to cope with the stress of our life. If we have a good mental health, then we can easily fight our stress for our life. It helps to be physically healthy. Mental health also helps to be physically healthy. I will discuss this later on. It helps to have a good relationship with others. It also helps to make meaningful contributions to your community.
If you have a good mental health conditions, a very good contribution to the community, to the society. It also helps to work productively. Mental health always help us to be creative, to be productive in our life, to do some productive work for our society. And it also helps to realize your full potential. Actually, every individual, every person have some good qualities, some good potential, and this good mental health only able to realize you that you have that quality. So what are the factors that can affect our mental health? There are many factors which can affect our mental health. Biological factors, such as our genes, our ancestors, or our chemistry of our brain. Life experiences, what we experience in our life, daily life, that also affect our mental health, such as trauma or any kind of abuse. Family history of mental health problems. If anyone's family had some mental health problems, it also affects his or her mental health. Your lifestyle, your daily life, your daily activities, such as diet, physical activity, and substances use. Substances use means what kind of drugs you are using. So all these are affecting our mental health. So now we would look what are the signs of mental health problems. If anybody has mental health problems, what will be the signs? A change in your eating and sleeping habits. The first signs, the first to identify that you have some mental health problem, that is a change in your eating and sleeping habits. Your appetite will be reduced, decreased, and it also, your sleep will be reduced, or it can be not, when you wake up, you will not feel as refreshed. Some hangover persists if you have mental health problems. Withdrawing from people and activities you enjoy. So if you have any conditions like mental health problem, you will try to withdraw from people. You will separate yourself from the others. Having low or no energy, you will have less energy to do any kind of work. You feel numb and nothing matters. If anything happens, you just don't care. Having unexplained aches and pains. You have pains, you will experience pains and aches which cannot be explained by you, because you cannot understand properly why these pains are happening because of your mental health problems. Feeling helpless or hopeless. Smoking, you can start smoking, drinking, or using drugs more than usual. So if you have problems, then automatically these bad habits will increase. Feeling unusually confused, forgetful, angry, upset, worried, and scared. All these problems will gradually come up, and it will disturb you continuously. Having severe mood swing that cause problems in your relationship. We experience sometimes. So when these mood swings is very severe, then it is the sign of problem. It is a sign of mental health problem. Having thoughts and memories that you can't get out of your head. Some thoughts, some difficulties, some bad experience, some bad memories that you can't remove from your thinking. Always it is coming to your mind. It is disturbing continuously. You cannot concentrate on any work. You cannot focus in your work. Hearing voices or believing things that are not true. This really happens. You can hear voices.
and not real, which is not realistic, which is not true at all. Thinking of harming yourself or others. You can think to harm yourself and also to harm others if you have problems. Not being able to perform daily activities, I think it is daily task, yes, like taking care of your kids or getting to work or school. Sorry. So now we will identify what are the factors that involves in mental health problems, such as anxiety disorder. Anxiety disorder is a feeling of fear or dread or uneasiness. Common anxiety signs and symptoms are feeling nervous, restless, and tensed, having a sense of impending danger, panic or doom, having an increased heart rate, breathing rapidly, hyperventilation, sweating, trembling. Trembling means kappa, trembling, feeling weak or tired, trouble concentrating or thinking about anything other than the present world. So all these are symptoms of anxiety disorders. Now, depression. If you depressed, depression is very in our life. So depression is a mood disorder characterized by lower of mood, loss of interest and enjoyment, and reduced energy. It is not just feeling sad. There are different types and symptoms of depression. There are varying level of severity and symptoms related to depression. Symptoms of depression can lead to increased risk of suicidal thoughts or behavior. So what are the signs? Tiredness, alcohol abuse, sadness, thought of death. You will think that I will die. I want to die. I do not live. Do not want to live. Feeling guilty. You may have sleep problems. Matlab, no concentration. You cannot concentrate to your work. Again, your changes in your appetite. You can get angry very easily, and you want to isolate yourself from others. These are the symptoms of depression, which is also a mental health problem. Now, stress. Stress is a very important factor, also very important. Stress is a normal feeling. There are two types of stress actually. Acute, which is which happens very quickly or very situational. This is a short-term stress, goes away quickly. You fight with your partner, or when actually we surprised with something, then we feel stress actually. And this is very necessity to have this kind of stress. Because of that, some glands secrete some hormones to react quickly for that kind of accidental situation. It may be accidental situation or surprising situation. It also occurs when you do something new or exciting. All people have acute stress at one time and another. So what are those acute or short-term stress? Feeling worried, nervous, or unable to switch off, heart beats harder and faster to pump, more tummy issues due to the rush or stress hormones, skin becomes more sensitive and oily, problems between the sheets, muscles tense up as they preparing to make a run for it. And what is chronic stress? Actually, the acute stress is necessary. The chronic stress is very harmful. This stress that lasts for a longer period of time, which is harmful to our body, which is harmful to our mind. You may have chronic stress if you have money problems, unhappy marriage, trouble in work, or many kind of our life problems. You can become so used to chronic stress that you don't realize it is a problem actually.
If you don't find a way to lead to mental health problems. What are those long-term factors? Tension, headache, migraine, mental health problems, serious heart problem, trouble breathing, hyperventilation, panic attacks, skin and hair condition, increased risk of type 2 diabetes, fertility problems. All these problems can arise due to chronic stress. So now, what are the benefits of exercise? What are the factors involved when we do exercise? Exercise decreases sensitivity to the body's reaction to anxiety. If you do exercise, you can able to control your anxiety. Additionally, a regular exercise program can help easy symptoms of other common co-occurring conditions such as irritable bowel syndrome, which is interrelated. When you anxiety level is up, you can have an irritable bowel syndrome. Exercise helps to promote growth of new neurons in key areas of the brain. If you do regular exercise, it can grow your new neurons. Neurons are the nerve cells, we know that. It can increase in numbers if you do regular exercise, including the hippocampus. Some researchers suggest that they may play a role in relieving symptoms of some psychiatric conditions, including depression and anxiety. So, exercise is very much beneficial for our mental health. Depression. Light, moderate, or vigorous exercise have been shown to reduce the severity of depression. In fact, exercise may be as effective as other treatment for depression. It's possible that regular workouts reduce inflammation, which has a positive effect on people with this condition. Exercise decreases stress hormone. Exercise decreases the stress hormone like cortisol, which secretes from our adrenal glands during the time of stress. So it also increases endorphins, your body's feel-good chemicals, giving your mood a natural boost. When you do exercise, you know very well those who do regular exercises. After exercise sessions, because of the chemical release in our brain, from the glands. Physical activity distracts you from negative thoughts and emotions. Physical activity can take your mind off of your problems. You can forget the problems of your life. You can forget it through physical activities. It can be it can distract you from negative thoughts to positive one. Exercise promotes confidence. If you do exercise, you have more confidence. It can help to lose your weight, tone your body, maintain a healthy glow and a smile. You may feel a subtle but significant boost in your mood. Exercise can I think because of time constraint, I will go to, I'm going to skip some my points. Better physical health may mean better mental health. While stress can cause illness, illness can also cause stress. So exercise provides a buffer against this stress. Buffer means it mitigates this stress. It switch off this stress. So aerobic exercise, including jogging, swimming, cycling, walking, gardening, and dancing, have been proved to reduce anxiety, depression, etc. These improvements in mood are proposed to be caused by exercise-induced increase in blood circulation to the brain and by influence of the hypothalamic pituitary adrenal axis stress. This physiological influence is probably mediated by the communication of this hypothalamic pituitary adrenaline axis with several regions of the brain, including the limbic system. I will not go detail in this area because of short of time. The amygdala, which generates fear in response to stress, and the hippocampus, which plays an important part in memory formation as well as motivation. Yoga. Yoga can also be very, very beneficial for our mental health. Yoga means here I mean to say Hatha yoga or yogic asanas. These are very, very beneficial for our mental
Aerobic exercise, there is a growing research evidence that regular aerobic exercise such as running, cycling, or swimming is associated with better psychological health. Then what are the effects? Effect of physical activity and the brain? Chronic effect, long-term effect is lifetime exercise is associated with enhanced brain function and a decreased risk of developing neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. These are the chronic effects. And acute effects, immediate effects. A 30-minute session of physical activity can help improve memory for studying and critical thinking for assignment. So, where to begin? How do we exercise? Use the physical activity pyramid and the FITT principles. That is frequency, how hard we will do, the time, how long it will be done, and the type, what type of exercise we should do. So you can see the pyramid. So cut down your sitting time on computer and TVs. 2 times a week, strength activities, do strength activities and flexibility activities such as lifting weights, curl-ups, push-ups for strength, and stretching and yoga for flexibility. 3 to 5 times a week, do cardio activities such as running, swimming, brisk walking, and biking, and recreational activities such as tennis, hiking, basketball, skating, etc. And every day, take a stair, do not take a lift, walk instead of drive or ride, do work around, walk with your dog if you go for a walk, park your car further away. So avoid riding car actually. Next is where is the slide? So what will be the schedule? What should be the schedule for everyone? That is frequency. How often we should do? 3 to 5 days per week. Intensity, it should be moderate to vigorous. Moderate, feel somewhat hard, and you should be able to carry on a conversation but not be able to sing. Actually, during exercise or after exercise, you can conversation with others, but you cannot able to sing. That much hard you should do. Vigorous, that is feels challenging. You shouldn't be able to say more than a few words without pausing. You cannot say more than few words, 3 to 4 words, and you have to pause yourself because of your breathing. A time 20 to 60 minutes can be accumulated in 10 minutes bouts throughout the day. And types, what type of exercise you should do? I already mentioned it: walking, jogging, running, all these. And next, sit less and move more. Sitting too much is a health hazard. It also associated with increased risk of chronic disease. Cancel out the negative effects of sitting too much. So it is important to be as active as possible. Do not sit for a prolonged period of time. It is detrimental to our health, physical as well as mental health. How can you be less sedentary? Take a walk break frequently during long bouts of sitting. Stand up as frequently as you can. Stand up and do work when on the phone, and walking or cycling when possible to do explore around campus. So all these we have to maintain for a good health. Eating well, you have to eat good foods, with less fat and with much protein, and we should have take more fruits and vegetables than carbohydrates and protein actually. And also water is very important. Plenty of water we should eat. And now the importance of sleep. 7 to 8 hours per night is recommended for adults. So lack of sleep can lead to increased appetite, overeating, energy deficit, and weight gain. Sleep is a key regulatory body process, including metabolism. Actually, if we do regular exercise, it maintains our biological clock, that's situated in our brain. If we do regular exercise,
we can wake up, we can go sleep easily as early as possible. So actually, those who do exercise regularly, they can feel how our body acts. What are the body parts that are not working properly, or what are the belly fats that is excessive for our health, our body, excess for our body. So if you do exercise regularly, any kind of yoga or aerobic exercise or swimming or cycling, anything, any exercises, if you do regularly, you can feel your body, you can judge your body, and as well as your mind. I think if anybody have any question, please, you may ask now. স্যার Yes. আমাদের ইন্টারেক্টিভ সেশন আরেকটা আছে স্যার, Okay, sir. আমরা পরে যাব সেটাতে। ডক্টর বিপ্লব চৌধুরী, থ্যাংক ইউ স্যার ফর সাচ মোটিভেশনাল স্পিচ। এগেইন থ্যাংক ইউ ডক্টর চৌধুরী। আমরা এরপরে ডক্টর মহেশ এস খেটমালিস, তার সাথে আমাদের আগে পরিচয় ঘটেছিল। ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজের ব্যবস্থা করেছিল ওয়েবিনার, সেখানে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। আমাদের আজকের এই আন্তর্জালিক যে আলোচনা চক্র, সেই আলোচনা চক্র জাতীয় স্তরেও একটি অ্যাডভাইসারি কমিটি তৈরি হয়। ডক্টর মহেশ এস খেটমালিস তার অন্যতম সদস্য। ডক্টর মহেশ এস খেটমালিস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিশ্বভারতী, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স। আমরা এখন তার কাছে কিছু কথা শুনবো। আমি তাকে অনুরোধ করব, নাও আই রিকোয়েস্ট ডক্টর মহেশ এস খেটমালিস স্যার টু ডেলিভার স্পিচ। Thank you, sir. Good evening, everybody. Pleasure that I've been given this opportunity to interact with you all. First of all, I thank the Suri Vidyasagar College, Department of Physical Education, for hosting this particular webinar. I also extend my heartiest thanks and congratulations to the principal of the college, Professor Tapan Kumar Paricha. I also congratulate the physical education professor, Dr. Bappa Sangwin, for organizing this. In this interactive session today, I would say interactive because most of the people, they are aware of the physical activity, and they do know how to do the activity, because in this 2 years of time, lot many people have learned about the physique and the body and how to maintain our body, maybe by nutritious food or maybe by the physical activity. In the entire session, since we have started from say about 3 o'clock, 2 o'clock onwards, wherein Dr. Pintu talked about a sound body and a sound mind and a sound body, and how we improve it through practicing yoga. Because nowadays, generally people talk about breathing and breathing exercise. So yoga is, I think, sort of the best method of practicing physical activity. If you talk in terms of pranayam and pratyahar, or when we talk about mind and all, so yoga plays a great important role in this. And wherein Dr. Biplab Chaudhary talked about benefits of exercise and mental health, wherein lot many areas sir has covered, and also talked about the fit principles and the pyramid of food that we eat. So that was very aptly projected by Dr. Pintu and Dr. Biplab. I also would like to extend my heartiest thank you to the Vice Chancellor, Professor Lakshminarayan Mandal,
And also would like to give a what do you say, uh, a fitness hug, I would say, from here, that this kind of webinar has been organized because, as sir has rightly said, that I was been given one of the opportunities in the previous times wherein we have interacted regarding fitness. So I have got to say in this that when we talk about exercise and fitness, it is said that charity begins at home. That is the good old saying. But when we say that it's charity begins at home, I put the saying in a different term. It says that charity begins self. Whatever we do, we have to do it from ourselves first. Then we have to tell it to people. And if you see the speakers today, they do the exercise and all. They do it regularly. So as I said, it is very aptly presented by them all. And I would say that nowadays it's what do we say? It's summer's going on, so we have to have plenty of liquid food so that our body is maintained hydrated, and a bit of solid foods which will make our body into a what do you call motion mode. So once again, with these words, I extend my heartiest thanks and congratulations to Suri Vidyasagar College, principal of the college, and the physical education professor of the college, and all the associated members who have been in the seminar. I'm sorry that my video is not visible. And I also would like to extend my heartiest thanks to Dr. Kaushik Kumar Datta, member of IQC Suri Vidyasagar College. And once again, thank you all, and thank you for hearing me and giving me this opportunity to me. Thank you, sir. Over to you. Nice, Thank you. nice Thank to you, see you, sir. sir. Dr. Mahesh S. Ketwalis, thank you, sir, for enriching us with such informative talk. এরপরে বাংলার পার্টিসিপেন্ট বেশি আছে, ছাত্রছাত্রী, সেই জন্য এরপরে আমরা যে কথোপকথন পর্বে চলে যাব, জিজ্ঞাসা, এই ইন্টারাকশন সেশনে এই 33টি কোশ্চেনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই পর্বটি পরিচালনা করবেন আমাদের সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক বাপ্পা সাঙ্গুই। আমি তাকে এখন এই পর্বের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। Sir, I have a question, sir. Sir? Yes, sir. Sir, first and foremost, I would like to express about my student of Suri Vidyasagar College in the field of history honor, sir, second year. My question is that, sir, is it that, sir, connected with just only one physical exercise or another thing else? There is no, sir, another activities or activities in our life. Just on the going session, I have just learned just physical activities or physical doing something or yoga, sir, a sound mind in a sound body or charity and so forth. So my question is that what is the main purpose to organize such a, sir, virtual session? So if you say something regarding this context, sir, I will be very enthusiastic, sir. What is the main purpose, sir, to do so, sir? So
Am I not Who is audible, going to sir? the myself, or I don't know. It is a question for the organizer. Organizer, actually. It is a question for the organizer, because what is the purpose for the virtual mode? I think Vice Chancellor sir may be able to answer this properly. Idol, do you hear me? Ji sir, I am audible. You are audible. Sometimes offline seminar is organized, sometimes on virtual mode. As because the experts, they are from Suri, it is far away for their working place. So it is not possible by this time to come here into the vicinity of Suri Vidyasagar College. That was the if they were available on offline mode. In that case, the offline seminars should have organized, but the seminar actually being formed with the detailed informations and consent of the time and date from the expert members. That's why this virtual mode had been organized. Okay, and you will come to know later on, even if any seminar is organized by offline mode, you will be present there, I think. But are there any problems to follow the speech or the deliberations? Not that. So this is the conditions. Generally, it is made. Now the complete lockdown had been lifted, but it is still not sure. That's why the virtual mode had been preferred by the college and the department also. Okay. Okay, thank you. And also thank you for Associate Professor and for Yes, please. Yes, please. Yeah. It is a very tough question for the science, because here is the one side is the science and one side is the in general way. Actually, in the Manomai Kosh, according to the Jog, the three Upanishad, Manomai Kosh by the five sense organ. This is entering the brain. Brain and mind is not actually differentiation much more. This is controlled by which in the mode of Jog, in the various literature in the Jog, there's the three Upanishad. There is mind is also controlled by the brain. Brain and mind is the as per the equal, and the Atma and Paramatma, Atma and mind. Atma, here is the term used in Atma, Man, Buddhi or Ahankar. Already the sir, BC sir is said about that. So mind, almost similar, almost like similar of the brain. There is no difference. In the science, they call it brain, and in Jog literature, there is mind, not is another thing. Because whenever I see anything, then our changes occurring in our body, it is through mind. This is also the brain. Sensory organ received any sense impulse and input it to brain, and brain, what occurred? The expression is changes in between the body. So mind is also as like the same. The brain and mind is similar, not is a differentiation here. Yeah. হ্যাঁ, এই বিষয়ে যদি আরো যদি কোনো কোয়ারি থাকে করতে পারো।
সত্যি কথা বলতে আসলে যোগের ক্ষেত্রে মাইন্ডকে বলা হয়েছে মাইন্ড হিসাবে যোগের বিভিন্ন রকম উপনিষদে, কিন্তু এই মাইন্ডটাকে ব্রেন বলছে সায়েন্সে, অ্যানাটমিক্যাল এন্ড মেডিকেল সায়েন্স এটাকেই মাইন্ড বলছে। তার কারণ হলো গিয়ে আমরা মন থেকে এই যে আমরা Also, I'm not comfortable in Bengali. Rajesh Kumar. Okay. Yes, yes. Okay, no problem. Any other question from anyone? Yes, sir, I have a question. Yes, please. What is the right amount of time to wait after eating or before practicing yogasan? And how long should I wait after practicing yoga before I can eat? How the time is, or How long should I wait after practicing yoga before I can eat? okay. Actually, first of all, I say about the yogic diet. Which type of diet you taken? Okay. It depends on the what type of diet you've taken, because there is also one term, the yogic diet. So it is और in generally practice करने के पहले कितने time actually अगर देखिए if you have a diet in yogic diet, there are four rules for the dieting. In your total stomach there are the 4 part, 4 अगर पार्ट किया जाए तो उसके अंदर से 2 पार्ट आपको खाने से पूर्ण करना है, 1 part by water and 1 part for the ear circulation. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ऐसे हिसाब करके खाने के टाइम ये सब नहीं याद रख सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, इन जनरली हम लोग ये सब नहीं सोच के ऐसे ही खा लेते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका खाने का अमाउंट कितना था, उसके बाद डिपेंडेंट एज पर योगा प्रैक्टिस। जैसे if you are practicing pranayam, then you are allowed to every time. I think प्राणायाम के लिए कोई मेडिटेशन के लिए कोई अलग से कोई टाइमिंग होके आपको प्राणायाम करना है ऐसे नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज मतलब योगासन रिलेटेड, आसन रिलेटेड कुछ करना है तो उस टाइम आपको स्टोमक फुल्ली लोडेड नहीं होना चाहिए, आधा घंटा से 1 घंटा बाद करना चाहिए। कैसे खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। Okay, thank you, sir. और किसी को कुछ क्वेश्चन? স্যার গুড আফটারনুন। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, তো আপনি যে কোষা সম্বন্ধে বললেন যে একটা কোষা অল কোষাস আর ইন্টাররিলেশন, মানে একটা আরেকটার সঙ্গে কানেক্ট। তো সেই ক্ষেত্রে যদি অন্নময় কোষ মানে ফিজিক্যাল বডির জন্য যদি আমি আসন করি, সেই ক্ষেত্রে আমার মনোময় কোষা বা ক্লিয়ার করে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন। আসলে কি হয় দেখবে, একদম ইন জেনারেলি আমি একদম তোমাদের জায়গা থেকে জানি না আপনি কি বলছেন, স্টুডেন্টদের জায়গায় গিয়ে বলছি, ছাত্ররা কি করে, যদি আমি একটা উদাহরণই দিচ্ছি, যদি কেউ ওভারওয়েট হয় আর কেউ আন্ডারওয়েট হয়, যে আন্ডারওয়েট সে কিন্তু মনের মধ্যে সবসময় তার চলতে থাকে, ইস লোকেরা দেখে কি ভাববে আমার এইটুকু ওজন, আবার যার বেশি ওজন সে আবার ভাবতে থাকে যে আমার বেশি ওজন লোকেরা কেমন ভাববে, এই একটা মনে। সুতরাং যদি মনোময় কোষ অন্নময় কোষ যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে তার মনে बाद में मैं आपको समझ देते हैं, ठीक है, मैं पहले इनको बोलने दीजिए, उसके बाद इसी सेम क्वेश्चन का मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोलूंगा। तो কি হয়, যখনই তোমার অন্নময় কোষ ফিজিক্যাল লেভেল যখনই ফুলফিল হয়ে গেল, তোমার মনের মধ্যে এমনি একটা সাহস বা একটা মনের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা চলে আসে, আমার শরীর তো বেশ চাঙ্গা, তাহলে আমি এটা করতে পারি। একই সময় অনেকের কি হয়, শরীর ঠিক না অথচ মনে বেশ জোর আছে, সুতরাং মন দিয়ে করে ফেলে। কিন্তু ইন জেনারেলি যেহেতু আমি বলেছি বা আমি না, সাহিত্য বলছে যে প্রত্যেকটা কোষের সঙ্গে প্রত্যেকটা কোষের ইন্টাররিলেটেড, যদি মনোময় কোষ ভালো হয় তা প্রাণময় এবং অন্নময় কোষ যদি ভালো হয় তাহলে প্রাণময় আর মনোময় এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে। তখন শরীর যদি ভালো, আমি প্রথমে বলেছিলাম যদি আদার ভালো হয় তাহলে তার মধ্যে রাখার জিনিসটাও এমনি এমনি
ভালো হয়ে যাবে, এমনি এমনি হতে হবে। অন্নময় কোষটাকে যদি আধার মানি আর মনটাকে যদি মানি তাতে রাখা কোনো একটা জিনিস, তা সেটা এমনি এমনি তার যদি এটা ভালো হয় এমনি ভালো হয়ে যায়, এই আর কি। एक्चुअली इसका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है अन्नमय कोश को अगर कोई इम्प्रूव करेगा तो कैसे उसका मनोमय कोश को, कैसे माइंड को कैसे अच्छा हो सकते, इसका इंटररिलेशन जो कुछ है इसके रिगार्डिंग इसका क्वेश्चन था। किसी का अगर बॉडी अच्छा है, बॉडी अच्छा नहीं है, देखिए हार्ट टाइम उसका दिमाग में चलता है मेरा तो दुबला पतला शरीर है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या है ना, हार्ट टाइम एक माइंड से वो क्या करते पीछे भागते रहते, किसी के सामने नहीं आते। तो अगर उसका फिजिकल बॉडी ठीक हो जाएगा तो उसका मन में जो चलते हैं, नहीं मेरा तो ठीक है, लोग के सामने जाऊंगा कैसे सोचेगा मेरा तो बहुत ज्यादा वेट है, तो अगर वो एक आइडियल वेट में आ जाएगा तो उसको माइंड में क्या होगा ना, मेरा तो फिजिकली मैं फिट है, मेरा अच्छा है, तो उसका माइंड में भी इसके असर पड़ता है और माइंड ऐसे ही ऊपर जाते रहते हैं। यही है उनका क्वेश्चन था। और कुछ किसी का कुछ? हाँ হ্যাঁ স্যার, এটা যেটা আমি কোশ্চেন করলাম সেটার থেকেই বলছি যে দোজ পিপল আর ফিট, ফিজিক্যালি ফিট, তো সেই ক্ষেত্রে মেন্টাল দে আর ফিট বাই ফিজিক্যাল বডি, বাট হাউ কুড আই সে দ্যাট দ্যাট পারসন ইজ ফিট বাই মেন্টাল, হিজ আর হার মেন্টাল স্টেজ ইজ ফিট? एक्चुअली इन जनरल वे अगर आप ऊपर से देखा इनर मीनिंग आप जो बता रहे हैं, ये आपको आंसर जो चाहिए था इसका इनरली, कोई फिजिकली साउंडेड मतलब मेंटली साउंडेड होगा ये नहीं हो पाए, वो हो सकते। जैसे मैं जम नियम आसन प्रत्याहार के बारे में बताया, किसी के अंदर अच्छा फिजिक है लेकिन उसका प्रत्याहार का धारणा और अहिंसा ये सब कुछ अंदर है ही नहीं। आप इस आपका क्वेश्चन का शायद क्वेश्चन इस लेवल पे है, लेकिन मैं जो बताया ये है ऊपर से। आपको फिजिकली अगर फिट होगा तो आपका मेंटली ऐसे ऐसे ही फिट होते जाएगा, और बाकी सब कुछ आपको कैसे है, आप फिजिकल के लिए क्या कर रहा है, कितना आपको खाने के ऊपर डिपेंड करेगा। अन्नमय कोश सिर्फ तो आसन के ऊपर नहीं है, अन्नमय कोश के साथ कितने कुछ जुड़ा है। आपको खाना, जैसे फूड के अंदर से हमारा अंदर जो इम्पल्सेस आते हैं, जो नॉन वेज, जोगी फूड में क्यों नॉन वेज के बारे में बता जाते हैं, नॉन वेज खाते हैं किस लिए हम लोग, क्योंकि हमारा अंदर बाहर से इम्पल्सेस नहीं आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये सब कुछ सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी मतलब आसन करने में सिर्फ अन्नमय कोश का अच्छा होगा और मनोमय कोश में जाएगा, ये नहीं हो सकते। आपको करना है तो होल, जैसे मैं योग के बारे में जो बताया, योग को जो मिसकंसेप्ट है सिर्फ आसन प्राणायाम इसके बारे में हम लोग सोच लेते हैं और उसी तक सिर्फ जाते हैं, बाकी और भी बहुत कुछ है वो सब नहीं करते। ये नहीं हो पाएगा, तब वो इम्प्रूव नहीं होगा, आपका सिर्फ फिजिकल बॉडी का इम्प्रूवमेंट होगा। आपको इसके लिए माइंड का, ऐसे माइंड में आपको रहेगा, लेकिन माइंड का जो अच्छा जो होना है, जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, आप बोल नहीं सकते इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको। आपका क्वेश्चन ये था। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। Now it is time to draw the conclusion to such an educative webinar. Vote of thanks. Vote of thanks will be delivered by Professor Dr. Kaushik Kumar Datta, Professor in charge Morning Arts Section, Suri Vidyasagar College, and member IQAC Suri Vidyasagar College, Professor Dr. Kaushik Kumar Datta. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest Sir, Honorable Speakers, our Principal Sir, respected teachers, participants, and my dear students. It's a great honor for me that I have been asked to propose a vote of thanks in today's national level webinar. We are now gradually overcoming COVID-19 crisis, but the COVID-19 pandemic completely transformed higher education by closing down campuses, shifting to distance learning, and shrinking campus life.
These drastic and abrupt changes have impacted the physical and mental health and the well-being of our students. I think in this context, I hope today's national level webinar will show us the right direction. At the very outset, I, on behalf of the Department of Physical Education and IQAC of Suri Vidyasagar College, and on my own behalf, extend my sincere gratitude to our chief guest, Dr. Lokhinarayan Mondol, Vice Chancellor of SICOM Skill University. I express our heartfelt thanks to you for taking out time from your busy schedule to grace the event. Your presence on this occasion and your valuable speeches, your words have enriched us and have also encouraged us. I extend again heartfelt thanks to you. I extend my heartfelt thanks to today's honorable speaker, Dr. Pintulal Mondol, Asar of Central University of South Bihar, for being with us. I express my sincere thanks to you for delivering a wonderful lecture. Thank you, sir. Thank you. We also express our heartfelt thanks to our another honorable guest speaker, Dr. Biplab Chaudhary, Assistant Professor of Government Physical Education College for Women, Hooghly, West Bengal. Thank you, for sir. his valuable talk on today's webinar topic. Thank you. We'd like to take this opportunity to express our heartfelt thanks to all of our most valued participant teachers for their active participation in the webinar. We would also like to extend our thanks to the member of National Advisory Committee of this webinar, particularly Dr. Mohesh Khetmalis and others for their valuable advices. We are very thankful to our principal sir for his support and inspiration to organize such a webinar. I want to give thanks to the coordinator and all the members of IQAC for their guidance in organizing today's webinar. Organizing committee, particularly Bappa Sangui, Aditya Mondol, for their sincere efforts in making this national webinar successful. I give my love and affection to our beloved students for their cooperation, support, and patience. Lastly, we'd like to thank Sri Sushant Raha Mahasai for his well-organized conduction of this webinar. Once again, I would like to thank everyone for your valuable support and cooperation to organize this state-level webinar. Thank you very much. Thank you. আরেকটি ঘোষণা করা দরকার যে ইউটিউব এবং গুগল মিট দুটোরই ইনবক্সে ফিডব্যাক লিংক দেওয়া হয়েছে। যথাযথভাবে ফিডব্যাক লিংক পূরণ করলে আমাদের তরফ থেকে ই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। দুটোতেই ইউটিউব লিংক প্রফেসর বাপ্পা সাঙ্গুই কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।
Link only having 5 institution names. কি বললাম বুঝতে পারলাম না। There is some problem with the feedback link. হ্যাঁ বলছি। আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পূর্ণভাবে উদ্যম উৎসাহ দিয়েছেন আমাদের সর্বদাই আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর তপন কুমার পরিচা। তারকেও অনুরোধ করছি সভা শেষ করার জন্য। হ্যালো স্যার। Hello, sir. I am a doctor. I am Dr. Vidyasagar is speaking from Assam. Sir, I am still waiting for that, but feedback link is given only the college name. There is no other option. Yes, sir. Link edit. Yes, yes. বাপ্পা Sir, okay, sir. But there should be another option for other participants. Okay. Thank you very much. স্যার না বলছি স্যার কিছু বলে শেষ করে দিন। लिंक काम ही नहीं कर रही है। लिंक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आएगी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी। 1 घंटे बाद व्हाट्सएप तुम जाओ। एक तो बहरे वो है सुनाई देता नहीं है। हाँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ বাপ্পা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড আইকিউএসি শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজ আজকে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল ফিজিক্যাল এডুকেশন সম্পর্কিত তার সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং আমরা পরে আবার মিলিত হব এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ সকলকে।
হ্যাঁ 100 ক্রস করে গেছিল। 102-3 হয়ে গেছিল। ও 100 মানে এক সময় 102-3 হয়ে গেছিল। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যালো হ্যালো স্যার, আমি মডেল বিপিএড থেকে বলছি, দীপক রায় স্যার, জলপাইগুড়ি থেকে। তো আমরা তো স্যার বাইরের কলেজ থেকে ওয়েবিনারটা অ্যাটেন্ড করলাম, আমরা কি সার্টিফিকেট পাবো স্যার? হ্যাঁ স্যার, রেজিস্ট্রেশন করা ছিল আমার। হ্যাঁ স্যার, ওটা দেখছি, সেটাই হচ্ছিল না। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, যেভাবে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ফিল আপ করেছি সেভাবেই তো? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, মানে থ্যাংক ইউ। আবার ফর্ম ফিল আপ করতে হবে স্যার? ওকে স্যার।